Welcome, guys. Welcome to yet another episode of UpSkill Club with focus on system design. Today, we'll talk about consistent hashing. Um, I even haven't studied about the topic a week before. This is this is about us understanding how it happens in the real world, and also have taken a crack at how Redis uses it, so that we can understand how it is happening for users. Okay. Uh, well, luckily, from the resource source I have studied, it talks in samples and graphics, so it will be a easier write per se. Okay. So it starts with the problem of load balancing actually. Okay. Before you want to, or let's say when a company scales and you have good amount of data coming in, good amount of requests coming in, how do you make sure that the load goes to the exact server and it is optimized? That is the problem it tries to answer. And whenever you horizontal scale your server or service, that means simply either you add it or you remove. Horizontal scaling includes both, you adding more server and you removing the server based upon the incoming traffic. For a load balancer's perspective, it is important to understand how many containers are there, what is their output, um, and, and and then work efficiently in terms of distributing data efficiently. And this is what consistent hashing currently is being used in various shape and form in various servers. We'll try to understand that at first, but we'll start with a simple problem. Okay. Let's say what is the problem for? Let's try to understand that. Let's say you have n servers. Okay. The book says you have n servers, and one of the common ways to, if you have n server, is to identify to whatever request is coming in and the values that you want to fetch, the key, just run down that key through a hash, that you get a unique alpha not numeric hash value. And once you have this hash value, you simply take a modulus on this value to identify out of which on which server this request lies from 1 to n. That is the standard strategy. The example here is, let's say we had 7 keys and your hash function has given you some integer values, and you simply take a mod. This is how you will land. Correct? Somebody will land on 1, somebody will land on 0, somebody will land on 2, and that is how it will happen. And this is how it will get distributed. Okay, server, you had 4 servers and they get uniformly distributed, and things are distributed properly. Okay, but the problem arises. Now, this works well. So this scales well, works well, and the size of the server pool is fixed and it doesn't change. That means, let's say you are a new startup and you knew you have good amount of traffic, and only 4 servers or 3 servers or 10 servers will suffice, and that is not changing. In that case, this approach works well to start. The problem arises when you add or you remove a server. Okay, let's take an example. If you had to remove a server, and the algorithm to load balance is same, which is taking a mod based upon number of available servers. So you had some amount of keys, let's say from 1 to n, and you ran that through a hash function. You got some numeric values. Now you take a mod of 3, okay, because those are the number of servers available, and you get an index of server that the key should let's say lie on, and you do the redistribution. So, but this will happen for this example. If you have removed server 1 and the keys which were aligned were only key 0 and key 4, those are the only 2 keys, right? Though that should have been impacted, key 0 and key 4. But because of the algorithm that we have chosen, not only key 0 and key 4, if you look closely, a lot of other keys, example key 3, which was earlier part of some other server, is now lies on server 2. You see key 3 earlier was part of server 1, so it has to move to server 2. Similarly, if you see key 5, which was earlier part of server 3, will now move to server 0. So a lot of movement of keys will happen just because you removed a server. So what consistent hashing
tries to do is, if your server only had 0 and 4, key 0 and key 0, 4, only they should have been impacted. That is what it tries to do. Consistent hashing just a special kind of hashing, such that hash table is resized and consistent hashing used to ensure that only k by n, k is here is number of keys and n is the number of slots. Yes, correct. Uh, k is the number of keys and n is the number of slots. So that is what it tries to do. Okay, if I had to rehash the server, only key 0 and key 4 should have been impacted, not the other keys. That is what consistent hashing tries to solve. So now let's understand in simple terms how it actually functions. First, assume that there is an hash function, and you can use any algorithm, SHA1, MD5, doesn't matter. And that hash function has a range. Okay, that hash function has a range for the n value. Okay, in SHA1, the maximum allowed values will go from the hash space will go from 0 to 2 to the power 160 minus 1. So that is the hash space. This is what do you mean by hash? What is the number of possible hash values that can come out of this hash algorithm? If you use SHA1, this is the possible hash value, and that is called as hash space. And everything, whenever you run this function, everything should lie between this hash space. So what we do is we create a hash string out of it, figuratively, only figuratively. Okay, not technically. You don't have to, just to figuratively, so that you understand hashing better. Which is, if we join the first and last end, this is x0, and this is xn. Okay, this is x0 and xn. You get a hash string. Okay, you had a hash space of x0 and xn. You simply figuratively joined the last both, and you create a circular form of a possible hash function. Now you have a ring. Okay. Now what you do is, so this is a hash string, and this hash string has hash values, and if you run down, give it any value, you will get a value which will lie between x0 and xn, which also means it will lie on the hash ring. You have servers. You had servers to take care of. Now what you do is you run the servers to the same algorithm, uh, SHA1, MD5, whatever has been used, and you will get a hash ID, correct? Hash value. And you will assign that value, that space to that server. Example, if you had 4 servers, like in this case, S0, S1, S2, S3, and they all are run down. Let's say these are the values that you get. These are the spaces that you have get. So you have servers who also occupy space in your hash space, correct? Now what happens is hash key. This is how you solve the rehashing problem. The algorithm is a little bit different. Let's say earlier algorithm was to create a hash alphanumeric value, right? Now this is basically whatever algorithm that you have, so that you can access the value on the hash ring. So you run down the keys on the using the hash function that you have used. You get values, and your keys, which is the value that you actually want to tag. This can be incoming request. This can be incoming request. This can be something else. Um, they align themselves based upon the value that they receive on the hash ring. Okay, this basic server setup is ready. Now we'll stop here to take any questions till now, because everything will go by Leo from here. So I'll repeat for reference. So you have hash space, which is the possible number of values based upon whatever algorithm that you have chosen. What you do is you join both ends to create a hash ring. And to annotate the server's index on this hash ring, you use the same algorithm, so that you can mark, hey, this space is occupied by the server. Okay, and you do the same whenever a new request or new keys comes in, and it gets allotted a space in the hash ring. Any questions till now for this? In the chat, I'll just check the chat. Server Bukos. Yes. Yes. Okay. Yes, sir. See, so now why have we done this? To solve the rehashing problem, which is only the values which have changed when, if you have added or deleted a server, those should get changed and rehashed. That is why we are solving it, right? So how does the server lookup works is, it is very simple. Whenever you land on a key, it can be K0, K1, K2, K3.
You simply go move clockwise till you find the server index. That's it. As simple as that. Nothing complex. You land wherever. So you had a key, you got an index from the hash function, you go there and you just simply move clockwise. And you only stop when you find a server. Okay, that is how a server lookup works. So K0 key request goes to S0. K1 goes to S1. K2 go to S2. K3 goes to S3. Are we clear till now? Anupam, won't this increase the latency of lookup? It will. Very negligible. It will. But you already have to do some computation. This is computation. This is array computation. So it is not you querying somebody else. It's a local copy that you have stored in some shape and form, and that is what you're trying to compute. And Yes, it may be just the representation how it is shown that it is searching from S3 to S0, but not actually how actually might be stored, right? This is a representation. Just to understand. When I look up fast करने के लिए, they'll be sharing in the range form only. सीधा सीधा. Got it. Cool. Now you understand the basic concept of how the hashing is created and how you do a server lookup and how a server gets annotated whenever a request comes in on the hashing. Okay. Now let's see what happens when you add a server. There were 4 servers: S0, S1, S2, S3, and S4 gets added. How does it get added? You run it down through the same hash function. It gets a value and it gets annotated. Correct. Correct. And let's say in this example, it gets annotated here. All this is the use case of keys K0, which was earlier getting assigned to hey, this belongs to server S0, now needs to be assigned to S4. So how does this happen? Nothing special. It is just that whenever you are adding something, you still go clockwise, and now S4 is the server that you will find, and that is what you will return. Hey, I'm being served at S4. So this is what you need to rehash now. Okay, and whenever you are removing the server, example, let's take an example of whenever you're removing the server. Let's say S1 was removed in this lookup. Correct. Earlier K1, which was getting assigned to S1, now S1 is not there to serve because we have taken it down to save cost per se. Now K1 will get assigned to S2 because you will continue to do the clockwise lookup whenever you land on K2. So this is K1 needs to be rehashed. Cool. So this is a very basic approach of hashing. It has 2 limitations basically. First is, as you can see, the distribution there is no guarantee that distribution will be uniform because you are using the hash function, right? You are getting the value and you can get assigned anywhere, and then it is possible that on removing, example, especially in the case of removing, it is very apparent when you remove something, S2 will serve a very big partition versus S0 and S1, S0 and S3, correct? So that is first. Second is, and then to find out which server it is met, you need to still go to clockwise if the first server is found. Now, in this approach, what author says, it is almost impossible if you use the same approach, because by design of the algorithm, there will be variable size of partitions. There will be various size of partition. So, and what happens and how do they identify? Question is, how do you identify which all keys need to be rehashed? Whenever you land on a key, or whenever a server is removed, actually, so they do an inverse lookup. So when you land on a request, you need to go clockwise to identify which server that you belong to. But when you remove a server, actually from that particular hash index, you need to go anti-clockwise till you find a server and pick out all the keys that you found in this duration and then rehash them to the new server. So you don't need to rehash S2 to S1, these keys to S2. No, you need to identify S1 to S0 and you need to, let's say, reassign them to S2. In order to do that, you simply move anti-clockwise. Okay. Any questions till now? The chat. Yeah. One question, like for example, when there's a server removal, then that is fine. We are moving clockwise in the direction. Okay. For identifying the index or like reverse for reverse lookup as well. Now, when there is an addition of the server, for example, S4 was added.
Okay, at that time, will there be any key that will actually come to S4 first in a way? Reason being is that a function, the hashing function values would have changed ideally. Now that is my question. Like then fact, only S4 can be identified. Else S4 won't be able to identify itself for those keys. let's take this example. Go ahead, please. Like addition of the server. Go to the addition of server. Addition It's of- the removal one. Na? Go to the addition. For example, like here, S4 is a server that is actually added. Okay. Now, if a key comes, can a key have a hashed value of S equal to S4? Can it be possible? Because it won't be possible. Reason being, N is fixed. Okay. N we have not, are we incrementing the N in this scenario also? Like, N is fixed. We will, no, we don't need to increment. No. that's my point. No, we don't need to increment N. Now you're not identifying server from modulus. You're using the same algorithm using which the keys were getting hashed. Okay. So, so this was the hash. This was a simple array, right? Okay. Let's take this and try to concept understand it. This was the possible range of hash value from x0 to xn. Whatever keys you throw at it, you will land from x0 to xn. What you have done is you have similarly thrown server index also. Okay, got it. Got your point. Yeah. So once you do that, you will also get a unique hash value, and you will Got it. occupy a space in this array only. Got it. That is a kind of a And randomized function in a way. and figuratively, you will assign let's say get blocker space in the hash string. Now, whenever somebody lands in between this range, from this S3 to S0, you move clockwise and you identify, hey, server S0 will serve all these requests. Okay, got it. You don't Because I was actually thinking of the way like that particular range we are actually identifying, that is a kind of fixed, like fixed in a way, not the randomized value we are getting. Here we are getting the randomized values in a way. Yes. In a way. Right. अनुपम, why are we hashing our servers अगर उनसे randomized हो जाएगा सब कुछ? आप कह रहे हो कि इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि लोड अनबैलेंस्ड हो सकता है. तो हम अगर सर्वर्स हैश ना करें, सर्वर्स हम कांस्टेंट रख लें, तो उसमें क्या इशू आएगा? उसमें इशू नहीं आएगा. वही तो पहले वाली एल्गोरिथम जो सिंपल मॉडुलस पे चलती है वो यही बोलती है, कोई इशू नहीं. प्रॉब्लम ही तब आती है व्हेन यू ऑल्टर द n, either you add it or you remove it. That is when the modulus taking simple modulus fails. Because ऐसे समझो कि बहुत सारे कीज, इस रिंग को एग्जांपल ले लो, ठीक है. अज्यूम इसमें सब में 100 वो है डली हुई, इनके बीच में इन पार्टीज में 100 कीज, ठीक है. अज्यूम दैट, है ना. अर्लियर मॉडुलस पे चल रही थी, ठीक, और मॉडुलस से असाइन हो रही थी, और ये S0 S1 S2 या मॉडुलस सिंपल मॉडुलस से असाइन हो रहे थे कि जिस पे भी लैंड करोगे हैश के मॉडुलस से वहां से नहीं. अब तुमने S0 हटा दिया, अब 0 हटा दिया, n तुम्हारा 3 रह गया. जस्ट बिकॉज n 3 रह गया है, और वापस जब भी तुम हैश फंक्शन करोगे, बहुत सारी की जो पहले S3 पे लाई कर रही थी अब S1 पे लाई कर रही है, जो S2 पे लाई कर रही थी S1 पे S1 पे S2 पे लाई करेंगी. इससे होगा कि नंबर ऑफ कैश मिसेज जो होंगी वो बहुत ज्यादा होंगी कि कहाँ पर जाना है. दिस सॉल्यूशन इज प्रोडोमिनेटली यूज्ड इन कैशिंग सर्वर. कैशिंग में यूज होता है. कैश मिसेज बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है. तो तुम अगर सिंपल एक की वैल्यू कैश की तरफ देखो कि कहाँ लाई करता है, तो की दी तुमने, की अगर रीअसाइन हो गई दूसरे सर्वर पे तो वापस से लुकअप जाएगा ना उसका डेटाबेस. हाँ जी, है ना. तो कंसिस्टेंट हैशिंग ट्राइज टू सॉल्व if only 100 keys were in the range of S3 to S0, and if S0 was removed, only these 100 keys should be reassigned. Other system should stay intact. That is what it tries to solve at the core. So now, based upon design, if you look here, this is what it tries to solve. So the basis, and if you add a server, let's say if you add a server, you simply move next. Only the delta here. Let's say let's take the example of adding. Understood. क्या कह रहा हूँ कुछ और. Clear है कि क्यों कर रहे हैं? एक छोटा सा पॉइंट और है. कंसिस्टेंट हैशिंग होता क्या, मतलब व्हाट इज कंसिस्टेंट हैशिंग? ये स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि कितने नंबर ऑफ कीज को हमें मूव करना पड़ेगा. राइट, इफ अ सर्वर कम्स अप और डाउन, वो मिनिमाइज करनी है. मिनिमाइज क्या एक्चुअली उसे कांस्टेंट नंबर देता है, बट
आइडिया वो है। और ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जब कोई सर्वर डाउन जा रहा है, इस अप्रोच का कहने का मतलब ये नहीं है कि इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग, वो इसके ड्रॉबैक में आएगी अभी। ड्रॉबैक में है, ये तो है, दे आर टू ड्रॉबैक्स ना। आई विल रिपीट बोथ ऑफ ड्रॉबैक। फर्स्ट इज कि पार्टीशन बड़ा हो जाएगा इफ यू रिमूव सर्वर, because and you have used equal distribution. Whenever the moment you remove server, this S2 will serve most of the traffic instead of S3 and S1. तो hotspot problem जो होती है सर्वर की वो बन जाएगी, करेक्ट, हॉटस्पॉट प्रॉब्लम बन जाएगी। लेट्स से सिमिलरली S0 चला गया तो now it is serving the 3/4, करेक्ट, now 3/4, तो ये प्रॉब्लम है, that is first problem। and second is equal distribution नहीं होगी क्योंकि randomized algorithm है। अंडरस्टूड। वो तब मैंने ये नहीं सोचा था कि हम सर्वर्स की वो कैश कर रहे हैं, और लाइक कि हम हर बार लुकअप कर रहे हैं तो इतना एफिशिएंटली करने का फिर तो पॉइंट ही नहीं है सर। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है अपन। तो ये दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, वर्चुअल नोड्स बना दिए गए। ठीक, दे हैव सिंपल सॉल्यूशन वाज टू क्रिएट वर्चुअल नोड एंड दे ऑक्यूपाई इक्वल स्पेस, दैट्स इट। व्हाट दे डू इज वर्चुअल नोड्स, दे आर रियल नोड एक्चुअली, सो दे ऑक्यूपाई द स्पेस इन hash thing, and so each actual server, which is example है, इसको देखो ध्यान से, which actual servers are S0 and S1, only two servers, okay, in this example only S0 and S1. And now what they have done is they have created good amount of as you can see virtual nodes, S01, so S01 represents S0 का first virtual node, ठीक है, this is the value it gives। S00 is the first value, S01 यहाँ पर assign होता है, ये virtual node assign हो जाता है ऐसे, ठीक। Now let's see them in action। वर्चुअल नोड्स समझ आया, वर्चुअल नोड्स एग्जैक्टली क्या होंगे। मतलब एक्चुअल सर्वर्स देखो, पहले इस वाले केस में these were actual servers, राइट, अगर 3 सर्वर्स है तो 3 जगह ऑक्यूपाई करेंगे। अब ऐसा नहीं बोल रहे कि ठीक है कोई बात नहीं, हम मॉक लोकेशन स्टोर करके रखेंगे अपने सर्वर्स। बट फिर इसमें अगर सर्वर डाउन जाता है तो फिर कोई इशू नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। देखते हैं ना दोनों के इश्यूज कैसे सॉल्व। सर्वर डाउन हो जाना है तो इसका सॉल्यूशन हो गया कि रिहैशिंग बहुत छोटी होगी, वो तो सॉल्व हो रहा है ऑलरेडी, करेक्ट। प्रॉब्लम क्या आ रही है, पार्टीशन इक्वल नहीं हो रहा है एंड इक्वल पार्टीशन बड़े हो जाते हैं एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता किससे, ये दो प्रॉब्लम आ रही है, करेक्ट। बट इसमें जाएगा तो हमें 3 उनकी वो करनी पड़ेगी ना, 3 पार्टीशंस की रिहैशिंग, वैल्यू हटेगी ना, तो वो देखेंगे ना कैसे हटता है, और देखेंगे कैसे हटता है। अब देखो ध्यान से देखो, कोई चैट पे क्या कह रहा है, हाँ, इट इज मोर अबाउट कि रियल नोड ही है और सर्वर का रिप्रेजेंटेशन है वो मल्टीपल, एज इफ यू रीड व्हाट मनीष सेज, रियल नोड ही होता है ये। मतलब उन्हीं नंबर ऑफ सर्वर्स से और रिडंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम में, मतलब इनको डिफरेंट हैश फंक्शन से पास थ्रू कराया जाता है फिर टू क्रिएट वर्चुअल। सेम है ना, क्योंकि आप S0 को एक उसी हैश फंक्शन से पास कराओगे तो वही वैल्यू आएगी ना मेरे को। S0 करा रहे हो ना, S0 करा रहे हो, S1 को करा रहे हो, S2 को भी करा रहे हो, एंड यू आर ऑक्यूपाइंग स्पेस। तो अगर इसको इस डायग्राम को देखो तो जैसे एग्जांपल S00 से चलते हैं, ओनली देखो कि पहली बार S00 की पोजीशनिंग हुई है, ठीक है, S00 यहाँ पर सॉल्व हो गया, पर्पल वाला देखो, ठीक। देन अगली बार S01 एक और क्रिएट किया वर्चुअल नोड, तो ये ऑक्यूपाई कर लेता है S01 यहाँ पर इंडेक्स, देन S02, तो 3 जगह ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक। नाउ यू गो फॉर what I was saying is कि how are we placing these virtual nodes on the ring? We must be passing them through different hash functions, right? Otherwise same hash functions might be creating different values, right? I don't think different hash functions, if you create different hash functions, then your ring you are creating from the output of single hash function. एक hash function 0 to n values output में दे सकते हो, your ring is 0 to n. So I don't think hash function should change ideally, but not sure. नहीं, hash function change नहीं होता, these are new values altogether ना, they represent the same server एक है, मतलब I might be wrong, but there are multiple nodes. हाँ, नोड्स तुमने कॉपी क्रिएट कर ली, तुमने बोला कि यहाँ से यहाँ तक ना एक तरह से तुम्हें पार्टीशन, एक तरह से वो देखो, लेट्स से कि बहुत सिंपल है। What I see only benefit over here is the more the number of nodes, the smaller ring they have to cover, there are more chance of distribution, yes, balance distribution और बैलेंस होगा। चलो सिंपलीफाई कर देते हैं,
to make it more realistic, let's say there are two political parties, ठीक है? There were two political parties and we know both of them in India. For the sake of conversation, I'll not name them, ठीक है? So let's say party A and party B, and these are their members actually, ठीक है? And they are taking a onboarding drive. They are taking a onboarding drive. So what they have done is they have placed their notes. यहाँ पर मेरा भी एक और बंदा बैठा हुआ है जो कि पार्टी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, S11 पे पार्टी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 पे भी पार्टी ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दे हैव टेकन सीट्स, ठीक है? अब नाउ एक्चुअल यूजर्स जहाँ पर भी लैंड करते हैं एंड वो ऑनबोर्डिंग के लिए आते हैं कि हे आई वांट टू गेट ऑनबोर्डेड ऑन दी लेट्स से प्रोग्राम, so they get referred to in the clockwise manner the closest party representative, which is S10 or S11 or S12 for the case of party 1. The party एक ही है, which is the actual server, but it has 3 real nodes present as its representatives. Anupam, So, it's like in combination of vertical and horizontal scaling. नहीं मतलब vertical scaling में we are not changing any infra, right? We are not changing any मतलब सर्वर एक है तो मशीन एक है, which means कि आप उस पे 3 नोड चला पा रहे हो, तो it's like उस पे already like you have more processing power over there, right? so in a way, Anupam, what we are ideally doing is अगर एडिशन हो रहा है और रिमूवल हो रहा है तो हर किसी की मल्टीपल वर्चुअल नोड्स बनेंगे इन अ वे. ओके, अब वर्चुअल नोड बन गए, डला या निकला, रीडिस्ट्रीब्यूशन बेटर ही होगा क्योंकि किसी को क्या ऑल्ट इन अ वे, मतलब वो क्योंकि रेप्लिकास परफॉर्म हो रहे हैं. लेकिन इसका हैशिंग फंक्शन कैसे वर्क करता है? हाउ डू वी नो दैट? लाइक वो it is out of scope for today's discussion and out of scope. And same thing happens is, let's say it has to do a lookup, ठीक है? Let's say it has to do a lookup and it landed here. It will get annotated to S11 and it will be routed to server number 1. Okay? And then the more you increase the number of nodes, the more balanced the hashing will become. मतलब आप ये कह रहे हो ना वर्चुअल नोड्स एक्चुअली में बस रीमैपिंग होगी कि जो S0111 पे जाएगी वो रीमैप होके S1 को S1 सर्व करेगा उसे. रीमैपिंग को और लिमिट भी तो कर रहा है ना वो, नोड्स लिमिट भी तो कर रहे हैं, फालतू में नहीं होगा ना. अब इसी रेंज के होंगे ना, बस इस रेंज के हो रहे हैं, तो जो सर्वर मतलब आप ये कह रहे हो ना कि S11 पे जाएगी, S11 कहीं और मैप्ड होगी जो सर्वर 01 पे सर्व कर देगी उसे. सर्वर 1 मतलब ये एक्चुअल मशीन्स नहीं होंगी ना वर्चुअल नोड्स. नहीं ये बस तो रिप्रेजेंटेटिव. फिर इसमें प्रॉब्लम तो वही आएगी ना कि अगर एक भी सर्वर जाता है तो उसकी सारी इंस्टेंस. अनुपम एक बार आप वो डायग्राम खोलेंगे क्या? उसमें आई थिंक वर्चुअल वाला डायग्राम इज प्रीटी क्लियर, नीचे है थोड़ा. So it mentions about the hotspot problem which we saw कि अगर पूरा एक वो खराब हो जाए तो कैसे होता है, तो उसी ग्रीन वाले पार्टीशन को they are distributing in the ring. तो rehashing उतने ही कीज की हुई. थोड़ा सा ऊपर है डायग्राम, इससे ऊपर है. हाँ दिस वन. तो ये कह रहे हैं. तो पहले ये था, ये मेनली बैलेंस हो गया, ये दिखाने की रिप्रेजेंटेशन है कि पहले 4 सर्वर थे तो रेंजेस ऐसे पार्टीशन मिले हुए थे. सर्वर इतनी है, रेंज अभी भी इतनी कवर कर रहे हैं, बट हमने अपने आप को वो कर लिया है, टुकड़ों में बांट लिया, थोड़ा बस बैलेंस क्रिएट कर लिया हमने, ताकि पार्टीशन बड़े छोटे ना बने. ठीक है, पार्टीशन बड़े छोटे ना बने एंड जो लुकअप जाता है की का वापस से वो बहुत बड़ा ना हो. अब 3 बैलेंस हो जाए, पार्टीशन तो है सेम ही. तो जो तुम सार्थक कहना चाह रहे हो क्या एफर्ट उतना ही आएगा? हाँ एफर्ट उतना ही आएगा इफ सर्वर गोज डाउन, बट वो और एफिशिएंट होगा. क्यों? क्योंकि वो ट्री पहले से जब बैलेंस था, ये बैलेंस क्रिएट होगा. ये डायग्राम और बेटर कैप्चर करता है, इसको बता देता हूँ. ये चमक रहा है. और नहीं बस वो तो अभी भी नहीं समझ पा रहे कि जब सर्वर डाउन जाएगा तो हमारी n इंस्टेंसेस तो वो हट ही जाएंगे. मैं n के लिए तो रीहैशिंग करनी पड़ेगी ना बैकवर्ड्स जाके. सार्थक वो हम पहले भी कर रहे थे, पहले भी हम बस बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अर्लियर सॉल्यूशन में अगर इस वाले सॉल्यूशन में अगर आप जाओगे तो ये हम कर रहे हैं, दिस एफर्ट इज एक्सेप्टेड पर्सन. But when this effort is not happening, effort is not happening, how do you optimize कि lookup और faster हो और आपको कम जाके डेल्टास क्रिएट करने पड़े, और मेनली ट्री बैलेंस कैसे हो आपकी हैश कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यू ना हो जाए किसी सर्वर के लिए, उसके लिए वर्चुअल नोड्स यूज करते हैं. वर्चुअल एक मिनट सार्थक, एक उस सिस्टम पे वापस जाना, उस डायग्राम पे ग्रीन वाले.
पहले डायग्राम पे ध्यान से देखना चाहता है, जब फिजिकल नोड नहीं एग्जिस्ट करती विदाउट वर्चुअल नोड्स है वो, राइट। विदाउट वर्चुअल नोड्स में अगर सर्वर 4 तुम्हारा डाउन जाता है तो सर्वर 3 टू सर्वर 1 में पूरा एक सेट ऑफ पार्टीशन बनता है, ठीक है। हाँ अब जी। ध्यान से तुम सेकंड डायग्राम में देखो, जो सर्वर 4 है वो जो तुम्हारे पहले डायग्राम में 4 पार्टीशंस थे उनके 4 पार्टीशंस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया वर्चुअली। अब जब सर्वर 4 डाउन जाता है तो उसका ट्रैफिक सर्वर 1, सर्वर 3 और सर्वर 2 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है रादर देन ओनली इन वन सर्वर। देख रहे हो डायग्राम से, समझ आ रहा है कॉन्सेप्चुअली ये है। या हिमांशु, मेरा एक डाउट था यहाँ पे। हाँ सर्वर 4 जब डाउन जा रहा है तो लेट्स अज्यूम कि सारे ब्लू वाले हट गए, ठीक है, सेकंड डायग्राम। यस यस। नाउ इफ वी गो क्लॉकवाइज तो सारे जो इंस्टेंसेस हैं वो सर्वर 1 पे हिट नहीं करेंगे। नहीं ना, पहले वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में, ठीक पहले है। वाले लेकिन जब सेकंड वाले डायग्राम में अगर तुम देखो, अगर और ब्लू हट जाता है तो जब तुम क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कुछ सर्वर 1 पे जा रहे होंगे, कुछ सर्वर 2 पे जा रहे होंगे, कुछ सर्वर 3 पे जा रहे होंगे। ऐसे देखो, जब ब्लू वाले का एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर ब्लू वाला डाउन गया तो जितना भी विच इज सर्वर 4, करेक्ट, अगर सर्वर 4 डाउन जाता है तो जितनी भी रेंज है विच इज 1/4 तो सबकी सब कहाँ मूव कर जाएगी, सर्वर 1 पे, करेक्ट। तो सबके सब कहाँ मूव करेगी, सर्वर 1 पे, सारा का सारा ऑब्जर्विंग इसकी सेकंड डायग्राम में भी वही हो रहा है क्योंकि हमेशा ब्लू के बाद अनुपम वो सेकंड कलर डायग्राम कोडिंग सही नहीं है। बहुत अच्छे से वो किया हुआ है कि सारा उसमें है ना कि इसमें भी ब्लू जाता है तो सारा लोड उस पे ही जा रहा है। हाँ कलर कोडिंग वैसी है। हाँ वो अभी इसमें आप ब्लू हटा के देखो सारा रेड पे ही जाएगा। I think we just like move forward. अरे तो वर्चुअल नोड is solving for balance, it is not solving for कि एफर्ट उतना ही लगेगा या फिर कीज कंसिस्टेंट हैशिंग व्हिच इज k by n का नंबर कम हो जाएगा, नहीं, k by n का नंबर व्हिच इज नंबर ऑफ कीज व्हिच वर रिप्रेजेंटेड सर्वर बाय सर्वर फर्स्ट, वो तो रीचेंज होंगी ही होंगी, है ना। इट इज ट्राइंग टू क्रिएट बैलेंस कि डिस्ट्रीब्यूशन बेटर हो हैश में। वर्चुअल नोड उसमें मेनली इनपुट देता है, ना कि एफर्ट को रिड्यूस करने में या फिर उसमें। ये क्लियर है? एफर्ट भी तो रिड्यूस हो ही रहा है ना जब डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो रही है तो। नहीं एफर्ट तो एक्चुअली देखना इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन तो 4 बार आएगा ना। वो जो रीहैशिंग होगी वो तो 4 किले होगे ना। 4 तो उसका पार्ट लेकिन नहीं, अगर ब्लू का हट गया तुम ये देख रहे हो कि वो रेड पे जा रहा है, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक सर्वर 1 पे नहीं जाएगा मेरे हिसाब से सबका। मेरे हिसाब से जब ब्लू हटा तो ये वाला ग्रीन रेड पे जाना शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारा ट्रैफिक रेड पे जा रहा है क्योंकि सब ग्रीन के बाद रेड आ रहे हैं। मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट इट अकॉर्डिंग टू इस एग्जांपल में ऐसा है स्क्यूड। नहीं वो रिप्रेजेंटेशन से कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे जहां तक मुझे समझ आ रहा है, नहीं वो यूनिफॉर्म का इशू भी नहीं है, वो ऐसा ही बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी ही बनेगी क्योंकि आप कंसिस्टेंटली हैश बना रहे हो ना। बट चलो बनेगी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ही। बट मुझे बताओ, जब कोई की आ रही है असली में ट्रैफिक तो 4 ही लोग सर्व कर रहे हैं, राइट? हाँ, अब 3 होंगे तो 3 में से एक ही करेगा सर। नहीं, तीनों में बंटना चाहिए ना ट्रैफिक, तभी तो कंसिस्टेंट हैशिंग हुई। उसी को कोई फायदा है वर्चुअल नोड्स का। आर यू सेइंग कि एट द टाइम ऑफ रीहैशिंग हम लोग वर्चुअल नोड को नहीं देखेंगे, हम प्राइम मतलब जो फिजिकल नोड्स एक्चुअली में उसको देखेंगे एट द टाइम ऑफ सर्विंग। आई फील एक बार चेक करना पड़ेगा ये डीप डेप्थ, वरना फायदा नहीं है। फायदा तभी है जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इससे आइडिया जो समझ आ रहा है मुझे, वो डिस्ट्रीब्यूशन ही समझ आ रहा है। अगर तुम डायग्राम देखो, राइट, वो करना वही चाह रहा है। ये पढ़ना पड़ेगा इसने कैसे कर रखा है, बट आइडियलिस्टिक वही होना चाहिए। हाँ मतलब दैट्स अ बेटर वे रीहैशिंग करते हुए, अगर सिर्फ फिजिकल नोड्स को कंसीडर कर रहे हैं, वर्चुअल कर रहे हैं। तो लास्ट जो तुम इंडेक्स कर रहे हो लास्ट वाले पॉइंट पे ही कर रहे हो कि हॉटस्पॉट क्रिएट करने में हेल्प करनी चाहिए वी नोड, करेक्ट? अगर इस वाले एग्जांपल में लेते हैं फिजिकल नोड्स के, इससे मैप करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 से लेकर 15 1 3 5 7 ये सारे सर्वर ए को लाइक करता है, सर्वर बी को वो 2 बार कैसे ले सकते हैं? इसमें तो शायद रेप्लिकेशन फैक्टर भी इंट्रोड्यूस कर रखा है। अच्छा ठीक है, फिर नहीं देख लेकिन ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पार्टीशन इतना ही स्मूथ बनेगा ये तो मुझे नहीं लगता। ये तो समझाने के लिए बताया था ना इसने लिखा है कि वी नोड्स आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जरूरी नहीं है। इट इज मोर अबाउट मोर बैलेंस क्रिएट करेगा, इतना जो सुंदर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं क्रिएट होगा। ओनली थिंग वी नीड टू नो चेक इज एंड गेट। उसने नीचे मेंशन भी किया वाली बात कि उसने डायग्राम में कंसिस्टेंट दिखाया है लेकिन असली में वो बहुत रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होती है और नॉन कंटीग्युअस होती है, जिसकी वजह से वो हो जाएगा। उसने मेंशन किया वो लाइन उस डायग्राम के नीचे। नॉन कंटीग्युअस इज बेसिकली जरूरी नहीं कि 0 से 4 पे अगला कुछ हो जाएगा, कुछ अगला कुछ हो जाएगा। वही जो पैटर्न वो फॉलो हो रहा है वगैरह जरूरी नहीं है, वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, मेंशन है वो तो।
ठीक है, तो इस पे और जाएंगे एंड वी विल ऐड learnings here. ठीक है, तो जैसे ये देखोगे टू reiterate, let's say ये तो अपन बात कर चुके हैं, हाँ ये बात कर चुके हैं, तो ये दोनों सॉल्व कैसे होता है? तो सेम एल्गोरिथम बेसिकली बता रहा है कि नया ऐड हुआ तो वही आप क्लॉकवाइज जाते हो पार्टीशन से भी, और आप हटता है तो आप पार्टीशन से भी रीअसाइन करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जाते। ठीक है, तो अब लेट्स टॉक अबाउट हाउ यूसी डज इट per se. UC doesn't does it in any shape and form. So we use Redis. Redis does it for us. So the interesting thing about Redis is Redis actually doesn't use this consistent hash, the shape and form that we discussed. Okay? It uses hash plots. It doesn't use consistent. It uses hash plot. It has a range of let's say 16384. ये fixed है Redis के लिए. ठीक है, configuration 16384 slots होते हैं, ये fixed है hashing के लिए. यानी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और आप नोड बस कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि कितने नंबर ऑफ नोड चलाने हैं, विच इज नंबर ऑफ सर्वर, समझ रहे हो? तो हैश लॉट फिक्स है आपके रेडिस के लिए, जितने भी नोड स्पॉन करोगे आप सिंपल इंक्रीमेंटल ऑर्डर में वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नंबर ऑफ सर्वर्स में। आपके हैश लॉट्स आपके नोड्स विच इज योर सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नोड ए बी सी डी जैसे इस केस में दिखा रहा है। ठीक है, तो जब भी नोड कोई चेंज होता है, लेट्स से एक कोई भी हट जाता है, अज्यूम करो सिंपली नोड सी हट गया, सिंपली नोड सी हट गया, तो रेडिस हैज एन इंटरनल एल्गोरिथम इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा किसको, 1001 से लेकर 1000 मतलब 10001 से लेकर 15000 के जितने भी हैश प्लॉट्स थे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बी और ए बी डी में इक्वली। जब भी ऐड हो जाता है कोई तो सबसे निकाल के उसमें डाल देता है, ठीक, तो सबकी साइज कम कर देता है वो और सबसे निकाल के नीचे कर देता है, तो ये साइज का बस फैक्टर से खेलता है वो। ठीक है, तो हाँ दिस नोड नंबर ऑफ स्लॉट इज दिस, हाँ बोलो। अनुपुर, तो अगर ऐसा होता होगा तो लाइक इन टाइम ऑफ लाइक हाई ट्रैफिक तब तो ये करना पॉसिबल ही नहीं है, नोड रिमूव करना। इन टाइम्स ऑफ लाइक डाउन टाइम पे ये चीज करते होंगे क्योंकि लेटेंसी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। इसमें तो फिर वही बात आ जाएगी ना कि कैश क्लियर करना पड़ेगा उन कुछ सर्वर्स को। कैश तो क्लियर करना ही पड़ेगा, लेकिन मेनली है तो कंसिस्टेंट हैशिंग वाला नहीं अचीव करता है रेडिस, ये बताना चाह रहा है। रेडिस कंसिस्टेंट हैशिंग नहीं अचीव करता है, तो अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूट करता है अपने हैश प्लॉट बेस्ड अपॉन नए नोड स्पॉन हो रहे हैं या फिर नए नोड हट रहे हैं, ये करता है। इम्पैक्ट क्या है जब वो होता है, बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इम्पैक्ट क्या आता है? लेटेंसी का इम्पैक्ट आता है, बिकॉज रेडिस चलो कैश की तरह हमने यूज कर लिया। नहीं ओके, नहीं तो ना, तुम बस असाइन कर रहे हो किसी और को, ये कह रहे हो कि नोड 4 डाउन चला गया, हैश डॉट सर्वर वो सर्वर, करेक्ट करेक्ट। सेइंग इज कि अगर नोड 4 डाउन चला गया तो वो हैश डॉट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो सारे के सारे मिस होना शुरू कर जाएंगे जब तक वो रीसाइन नहीं हो जाते किसी न किसी को, किसी न किसी को रीसाइन नहीं हो जाते। इस हिसाब से स्लॉट असाइन हो रहा है, बस हैश स्लॉट को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा कैसे काम करता है एक्चुअली। तो जैसा कि ये पा रहा है, Hello. Today we're going to learn about hashes, an especially useful Redis data structure. In this segment, I'll explain what hashes are, and I'll show you how to use them to model domain objects in an application. Hashes are collections of field value pairs and look a lot like a JSON object, a Java hash map, or a Python dictionary. Redis hashes are also mutable. We can add, change, increment, and remove field value pairs at any time, not just at the initial declaration. Hashes store field values as strings, which means that they are flat. There are no nested arrays or objects. Also, we do not need to predefine field names with Redis hashes, and as such, we can add and remove fields as needed.
While Redis hashes are schemaless, you can still think of them as lightweight objects or as rows in a relational database table. To explore Redis hashes in practice, let's think about how we'd model a player in a fictional online role-playing game, Mages and Minotaurs. In a role-playing game, players live, die, and are reborn, and this cycle of life is reflected in health points, armor, abilities, and battles. We'll store this information in a hash, with every player getting their own hash instance. We'll update this player hash with new information, create temporary fields, and use built-in functionality to increment numerical values and update strings. Enter the player Artexius, the proud elven knight. For this first example, we'll create a hash starting off with the fields name, race, level, health points, and goal. To create this hash, we'll use the command hset. The first argument to the hset command is the key name we'll use to access the hash. In this case, it's player:42. Oh, I don't think ये वो We're video using a common हाँ, ये Redis वो key नहीं है। naming. This is just map in Redis. ये हैश बता रही है बस ये देखना है कि अगर बस सिंपली नोड रीअसाइन कर देता है तो डाउन टाइम कैसे इंक्लूड होगा ये हैश दैट्स नॉट क्लस्टरिंग Redis. Hello. Today we're going to talk about scaling Redis. If your application grows, then you're going to need more memory, more CPU, and more throughput. So we're going to learn what it means to scale Redis to give you the extra capacity you need. We'll specifically learn how Redis cluster scales and provides high availability. Stay with me. Before we jump into the details, let's first address the elephant in the room, DBaaS offerings, or database as a service in the cloud. No doubt it's useful to know how Redis scales and how you might deploy it. But deploying and maintaining a Redis cluster is a fair amount of work. So if you don't want to deploy and manage Redis yourself, then consider signing up for a Redis Cloud, our managed service, and let us do the scaling for you. Of course, that route is not for everyone. The two most common of a system to handle a growing amount of work by adding resources to the system. The two most common scaling strategies are vertical scaling and horizontal scaling. Vertical scaling, or also called scaling up, means adding more resources like CPUs or memory to your server. Horizontal scaling, or scaling out, implies adding more servers to your pool of resources. It's the difference between just getting a bigger server and deploying a whole fleet of servers. Let's take an example. Suppose you have a server with 128 gigabytes of RAM, but you know that your database will need to store 300 gigabytes of data. In this case, you'll have two choices. You can either add more RAM to your server so it can fit the 300 gigabyte data set, or you can add two more servers and split the 300 gigabytes of data between the three of them. Hitting your server's RAM limit is one reason you might want to scale up or out, but reaching the performance limits in terms of throughput or operations per second is another. Since Redis is mostly single-threaded, a single Redis server instance cannot make use of the multiple cores of your server's CPU for command processing. But if we split the data between two Redis instances, our system can process requests in parallel, effectively doubling the throughput. In fact, performance will scale close to linearly by adding more Redis instances to the system. This pattern of splitting data between multiple servers for the purpose of scaling is called sharding. The resulting servers or processes that hold chunks of the data are called shards. This performance increase sounds amazing, but it adds some complexity. If we divide and distribute our data across two shards, which are just two Redis server instances, how will we know where to look for each key? We need to have a way to consistently map a key to a specific shard. There are multiple ways to do this, and different databases adapt different strategies. The one Redis uses is called Algorithmic Sharding, and this is how it works. To find the shard for a given key, we hash the key and then mod the result by the total number of shards. Because we're using a deterministic hash function, this function will always assign a given key to the same shard. But what happens if we want to increase our shard count even further? A process commonly called resharding. Let's say we add one new shard so that our total number of shards is 3. Now, when a client tries to read the key foo, they will run the hash function and mod by the number of shards as before. This time, the number of shards is different and we're modding with 3 instead of 2. Understandably, the result may be different, pointing us to the wrong shard. Resharding is a common issue with the algorithmic sharding strategy.
This can be solved by rehashing all the keys in the key space and moving them to the shard appropriate to the new shard count. This is not a trivial task though, and it can require a lot of time and resources, during which the database will not be able to reach its full performance or might even become unavailable. Redis uses a clever approach to solve this problem, a logical unit that sits between a key and a shard, called a hash slot. The total number of hash slots in a database is always 16,384, or 16K. The hash slots are divided roughly even across the shards. So, for example, slots 0 through 8,000 might be assigned to shard 1, and slots 8,001 to 16,384 might be assigned to shard 2. In a Redis cluster, we actually mod by the number of hash slots, not by the number of shards. Each key is assigned to a hash slot. When we do need to reshard, we simply move hash slots from one shard to another, distributing the data as required across the different Redis instances. Now that we know what sharding is and how it works in a Redis cluster, we can move on to high availability. Redis cluster is what provides sharding and high availability in open source Redis. हाँ, मतलब बेसिकली ये था कि हैश स्लॉट रीअसाइन कर रहे हैं तो n की जगह वो एग्जिस्टिंग नंबर 16,384 यूज कर रहे हैं, तो हर बार सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन अभी भी एकदम वो नहीं चलता है कि नया शार्ड ऐड किया रीअसाइन किया। वही है ना कि हम नया सर्वर डालते हैं तो वो हैश स्लॉट्स रिकैलकुलेट होंगे, सब में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, लेकिन कैश में तो वापस बढ़ जाएगा। मतलब मैं पहले यही तो कह रहा था कि ये जो आप बाय मॉडर्न कह रहे थे, मैं ये कह रहा था कि सर्कल पे भी अगर हम सारे डालते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट, सर्कल वाले में तो मॉड यूज नहीं करते ना। नहीं सर्कल पे जैसे हम डाल देते हैं कि 5 को कि 0 से इतना, मान लो 10,000 तक के, तो 0 से 2,000 एक सर्वर कर रहा है, एंड सिमिलरली एक सर्वर डाउन चला जाता है तो हम ऐड कि इसमें भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम दोबारा सर्वर्स की वो चेंज करेंगे ना। अब 5 स्टेप 4 हो गए तो 0 से 2500 एक करेगा, 2501 से 5000 अगला करेगा। बट सिर्फ वही इम्पैक्ट हो गए जो मतलब डाउन हुआ सर्वर। सो अगर जैसे 500 स्लॉट एक सर्वर सर्व कर रहा था तो सिर्फ वो 500 रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए। जो फर्स्ट केस में हम देख रहे थे जिसके अंदर शार्डिंग के अंदर जिसके अंदर हम मॉड्यूलस एन यूज़ कर रहे थे, उसमें सारी कीज़ का डिफरेंट आ रहा था, तो पूरा का पूरा सारी कीज़ वर गेटिंग रीडिस्ट्रीब्यूटेड, बट इसके अंदर सिर्फ वो पर्टिकुलर स्लॉट्स विल गेट इम्पैक्टेड। तो इम्प्रूवमेंट तो नॉट सेइंग कि हम सर्वर्स के वो फिक्स कर दो आप कि आपको क्या हैशिंग रखनी है, बस अपनी सर्वर्स खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि इधर से इधर तक सर्वर्स हमारे ये करेंगे कि हैशिंग इंडिपेंडेंट हो जाएगी कितने सर्वर्स हैं, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन हम हैंडल करेंगे। वही रेडिस तो कर रहा है इसमें भी। हैशिंग तो इंडिपेंडेंट ही है, हैशिंग का कंट्रोल करते हैं। नहीं जैसे आप पहले कह रहे थे कि हैश के बाद कौन से पे जाएगा ये मॉडर्न करके निकालते हैं हम, वो तो एक बहुत ही ओरिजिनल टेक्निक है। हाँ वो नहीं कह रहा मैं, जैसे अगर हम ऐसे भी कर दे कि हमने 5 सर्वर्स फिक्स कर दिए, जैसे स्लैश स्लॉट्स इसने सबके डिवाइड करे हुए, तो उससे बेनिफिट तो हमें वो मिल ही नहीं रहा ना, क्योंकि रीहैक वो होंगे तो सबकी जो कीज होंगी वो दोबारा कैश में से आएंगी, दोबारा जाएगा, तो बेनिफिट क्या लग रहा है इसमें? कोई बेनिफिशियल तो ऐसा नहीं लग बेनिफिट रहा। बस इतना है कि जब नहीं तो ये इंस्टेंसेस हैं जबकि हिट आती है, ऐसा नहीं होगा कि कभी हिट नहीं आएगा। दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस इज कि मिनिमाइज करो इस हिट को। एग्जैक्टली पर्पस तुम ये गलती कर रहे हो, मतलब ये बस ये अज्यूम कर रहे हो कि जब भी ये हिट इवेंट आएंगे, विच इज नया सर्वर ऐड होगा या फिर रिमूव होगा, तो देन हिट नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं, इट इज मोर अबाउट हिट उतनी ही आनी चाहिए जितनी जरूरी है, विच इज इम्पैक्टेड इन इम्पैक्टेड कीज। तो सारा तक इम्प्रूवमेंट ये है कि जैसे जो इनिशियल मेथड था उसके अंदर अगर 5 सर्वर थे, एक भी डाउन चला गया तो चारों के अंदर की जो कीज़ थी वो रीबैलेंस होगी। लेकिन नए वाले केस में क्या है, ये वाला जो अभी हमने समझा रेडिस के अंदर स्लॉट्स वाला, उसमें है कि अगर 5 में से एक डाउन हुआ तो सिर्फ वो कीज़ रीबैलेंस होगी जो आपकी उस सर्वर को बिलोंग करेगी जो डाउन गया, सबकी नहीं होगी। बाकी 4 की कीज़ विल रिमेन फंक्शनल एज इज़। तो कैश मिसेस दोनों केस में हो गए, बट सेकंड वाले केस के अंदर कम हो गए, फर्स्ट वाले केस में बहुत ही ज़्यादा होते। तो फर्स्ट वाले केस में बर्स्ट आता मिसेस का। नॉट तुम 1684 से ले रहे हो। नहीं, बट उसमें स्केल कैसे होगा? अगर आप फॉर एग्जांपल 4 सर्वर थे, आपने सिर्फ थर्ड सर्वर जैसे एबीसी में सी को हमने हटाया था, ओके, अब सी को हटाया तो
आपने अभी तो रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया सिर्फ सी के स्लॉट्स, कल को कोई सी दोबारा एडिशन होता है, ई एडिशन होता है फॉर एग्जांपल, तो हाउ डज दैट पर्टिकुलर लॉजिक स्केल, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ मुझे, क्योंकि वो कीज किसी पर्टिकुलर हैश को मैप होंगे ना, लाइक कोई लॉजिक होगा उसके बिहाइंड, वो नहीं क्लियर होगा। राइट, एडिशन में शॉर्ट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो शायद देखा नहीं हमने अभी, या वो तो कुछ लॉजिक होगा, देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने रिमूव किया तो आपने अभी तो काम कर दिया, आगे क्या होगा, फ्यूचर में कैसे स्केल होगा वो प्रोसेस। हैश डॉट डिस्ट्रीब्यूशन देखना है अपने को। मोर केस भी देखना है। तो चलते हैं। रेडिस को डॉक खोल लिया मैंने, वो देख लेते हैं। लिखा है क्या किसी ने? कह रहे मनी बोल। ये तो कहता ही है ऑथर, ये भी लिखा है रेडिस को डॉक पे, देख लेते हैं। हाँ तो ये देखो ऐड के केस में मूव कर रहा है, चूज तीनों को इम्पैक्ट कर रहा है, तो और क्वेश्चन इसलिए तीनों इम्पैक्ट होंगे तो ये तीनों इम्पैक्ट होंगे। रिमूव के केस में तो बहुत इजी है कि उतने ही हैश स्लॉट इम्पैक्ट होंगे, ऐड के केस में तीनों इम्पैक्ट होंगे। ओनली थिंग कि हैश स्लॉट में डला हुआ है इसलिए कोई डाउन टाइम नहीं आएगा ठीक है असाइनमेंट में। ये क्यों नहीं आएगा, ये कह रहे मूविंग हैश स्लॉट फ्रॉम वन नोड टू अनदर, क्योंकि कोई ऑपरेशन रुकता नहीं है, इंडेक्स आ रहा है वो सर्व हो रहा है। जब रीअसाइन होगा उस पॉइंट पे कैसे नहीं होगा, मतलब माइट भी पॉसिबल कि जैसे अगर उसको 3 क्लस्टर से 4th क्लस्टर में डालना है, ए बी सी से डी पे, तो वो ए बी सी से कुछ कुछ सिलेक्ट करके रेप्लिकेट करेगा डी के अंदर, एंड मीनवाइल जो भी ऑपरेशन सारे वो दोनों पे कर रहा है, एंड देन एंड में बस इंडेक्स स्विच कर देगा कि ये वाले स्लॉट्स को डी से उठाना है, सॉर्ट ऑफ, मतलब हो सकता है। दोनों पे नहीं करेगा ना, पहले वाले पे ही करना चाहिए, फिर पहले वाले पे करो, दूसरा जब जैसे ही रेडी हो गया एक्नॉलेजमेंट आ गया सारे उस पे मूव कर दो। हाँ मतलब वही और ऐसे। यहाँ लेकिन फिर यहाँ से वो भी भेजना पड़ेगा। एक डाउट था मेरा, लाइक मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ ऊपर। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ जी, लाइक अभी क्या हो रहा है ना, जैसे ये आईपी रिक्वेस्ट आ रही हैं, ये कहीं मैप्ड होंगी इन रेंजेस में 0 से 16 के, जो भी हैशिंग फंक्शन होगा रेडिस का,
उसके बाद ये कीज की कहीं मैपिंग होगी ना कि ये वाली की अगर आती है तो ये सर्वर 1 पे जाएगी, ऐसे वर्क कर रहा होगा ना ये रेडिस का। की से स्लॉट का मैपिंग आई थिंक, हाँ की से स्लॉट का मतलब जो हैश स्लॉट्स बनाए ना। तो मतलब मान लो ये हैश स्लॉट्स हैं जैसे तो इस पे कोई आईपी की आती है वो उसने इधर मैप कर दिया कि दिस इज आर आईपी इज बीइंग मैप टू मान लो 2000, और इस की इस पे सर्वर पे मैपिंग होगी ना कि 2000 पे जब आएगी तो वो सर्वर 1 सर्व करेगा। राइट। तो फिर इसमें जब ये हटता है तो इश्यू तो यही आएगा ना कि हमें सारी कीज की इधर जो भी होंगी मान लो S1 हट जाता है तो 0 से 5 के को डिस्ट्रीब्यूट करने में तो हमें सबकी वो चेंज करनी पड़ेंगी। और जब चलो ये भी एक बार को ठीक है कि S1 ऐड होता है तो हम उसकी सारी कीज रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इट्स फाइन, अगर हम इनको ऐसे कर देते हैं इट्स स्टिल नॉट अ वेरी कॉस्टली ऑपरेशन। बट जब ऐड होता है इस मेथड से कि 0 से 5 के था पहले रिमूवल में तो हम समझ सकते हैं कहाँ से हटाने हैं किस में ऐड करने हैं, जब एडिशन होगी तो हम कैसे निकालेंगे। अब मान लो इधर 8 के डिवाइडेड थे तो एडिशन में हमें कैसे पता होगा कि व्हाट्स द बेस्ट मेथड कि हम डिवाइड करें। So there are two things, at least what I read from what Anupam shared. Addition and removal both will be costly because it is evenly dividing everything. So even if you divide 16K from 3 to 2, both the servers will get impacted because the first server is supposed to now get 0 to 8K and then the second server is supposed to get 8 to 16K. So it's not like it will not really optimize for the number of movements. However, it is just saying because now it's a two-part process. First part is from key to the logical node, which is hash slot, and then there's a simple mapping of which hash slot maps to which server. The first part remains the same. Second part, movement will happen anyway. Like it's not optimizing for that. It's just that at some dictionary will just simply say server 1 initially was holding 0 to 5.6K. Now it will hold 0 to 8K. So the load is balanced. It's managing the load, not really optimizing for the operations that it will. नंबर ऑफ हैश मिस नहीं ऑप्टिमाइज कर रहा है रेडिस। वो जब मैंने पहली बार डाउट पूछा था तो मैं यही तो कह रहा था कि हैश हम फिक्स करते हैं उसकी बस हैशिंग कहाँ से कहाँ जाती है, तो आपने यही कहा था कि वो तो अभी वो डिफरेंट है ना, वो कंसिस्टेंट हैशिंग जो लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए, रेडिस इज नॉट यूजिंग कंसिस्टेंट हैशिंग। Right. That was the purpose. क्योंकि अभी अगर मैं let's say if I haven't done the study let's say last week, I would have assumed Redis consistent hashing use कर रहा है, and most of whoever has not, सब लोग हाँ consistent hashing use हो रहे हैं, but Redis unfortunately doesn't use hash lock. Another thing is, one more thing I was reading meanwhile, कि Redis also has a master slave infra, and to prevent this, which is every node ABC जो देख रहे हो ना उसका A dash B dash C dash भी exist करता है, ठीक है, and all the writes and the reads actually happen on ABC होते हैं। The moment node timeout आता है, node timeout is basically node doesn't respond to a node doesn't respond to an operation, जो A dash or B dash or C dash it gets promoted, so it has a fail proof कि ये occurrence के event और कम हो। That is how it tries to optimize master slave को, अपने सारे cluster की master slave copy create करके, and then उसके async। और Redis में इसलिए strong consistency नहीं maintain होती, क्यों? क्योंकि master to slave of these clusters का जो replication होता है वो async होता है pure। there are various way to replicate also, semi synchronous होता है, synchronous होता है और async होता है proper। तो Redis uses completely asynchronous, तो A पे सब कुछ चल रहा है read और write, और बस B पे replication चल रहा है सारे writes का asynchronous format। हाँ, yes, this is from season 1. Yeah, this is from call back to season 2 actually, season 2 season 2। तो ये सेमी सिंक्रोनस भी नहीं यूज होता है, पूरा एसिंक्रोनस। दैट इज हाउ इट ट्राइज टू ऑप्टिमाइज फॉर कि ये इवेंट कम हो, ठीक है, ये रीअसाइनमेंट, बट होते हैं तो इट हैज अ गुड अमाउंट ऑफ कॉस्ट। फॉर नाउ वी नो कि इफ रेडिस में क्लस्टर डाउन जाता है देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वड, इट इज नॉट बिकॉज इट इज नॉट यूजिंग कंसिस्टेंट हैशिंग। दैट इज द लर्निंग फर्स्ट। I have a question if we have time. Will that question hurt me? No. Then you can go ahead. So question is कि we understand कि caching करते हैं, fast होते हैं, we have in-memory caching, we have distributed caching. So I also understand कि हम वहाँ पे लगाते हैं, for example अगर कोई एक user है वो बार-बार same request body से बार-बार hit करे and we want to deliver the same response, so we don't want कि हम बार-बार उसको re-evaluate करें, just store the response.
So what else are the places we use caching? मतलब how to realize कि DB में indexing लगा देते हैं इधर तो easy retrieval हो जाएगा और इस जगह पे caching की जरूरत है. तो one of the interesting way I learned last year, last few months ago is reference based caching also, है ना, कि कौन सी की सबसे ज्यादा रेफरेंस हो रही है ना उनको मेम कैश में मूव कर दो, है ना, मेम कैश में उनको मूव कर दो, रीड राइट नहीं. तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जब राइट्स को भी ऑप्टिमाइज करते हैं तो सब कुछ कैश करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट, कि डेटाबेस है सब कुछ कैश कर दो लेजी लोड फॉर्मेट में, है ना. तो वही है, तो लेजी लोड फॉर्मेट में भी हाईएस्ट ऑकरेंस बेस पे मैम कैश में रखो, बाकी सबको नीचे जाना दो. ये बड़े ज्यादा और बड़े स्केल्स पे जब जाते हैं ना रीड्स, ट्विटर या फेसबुक के केस में तब यूज होता है. Yes, they want to optimize for it, but they cannot at their scale cache everything for all of these users, correct. तो जो यूजर सब बहुत ज्यादा चुल मचा रहे होते हैं उनके लिए और अच्छा कैश करते हैं, बिकॉज रेफरेंस बेस्ड कैश करते हैं, कौन से कीज आर मैक्सिमम रेफरेंस उसको मेम कैश में मूव कर दो. तो एक वो तरीका है कि रेफरेंस बेस्ड आइडेंटिफाई करना. सिंपल क्लाइंट बेस्ड कैशिंग पीपल डोंट रिकमेंड उतना, क्लाइंट बेस्ड कैशिंग इज नॉट दैट गुड. तो वन ऑफ द वेज दैट यू सेड कि क्या अगर क्लाइंट सेम रिक्वेस्ट ही भेज रहा है और सेम पैरामीटर्स से सेम टाइम स्टैम्प पे, हो सकता है क्या हम सेम रिस्पॉन्स भेजें. दैट इज अ वे फॉर टू डू दैट इन क्लाइंट बेस्ड कैशिंग. वॉल्यू लाइब्रेरी जो हम यूज करते हैं उसमें होता है ये सब तरीके, बट पीपल जनरली अवॉइड इट. कैश रिस्पॉन्स यू शुड डू इट अर्लियर in our in to save our Google cost. We used to do it earlier. Then we realized कि because हमारे सर्वर से होके नहीं, हम डायरेक्ट गूगल कॉल करते थे, है ना. तो we should do it earlier. Then we had to move it for other reasons, है ना, कि भाई एक बहुत पुराने यूजर्स उनको सेम रिस्पॉन्स ही आ जा रहा है हिस्टोरिकली, उनका एड्रेस चेंज ही नहीं हो पा रहा. गूगल पे चेंज हो चुका है, जैसे सिकंदराबाद इज सिकंदरपुर नाउ, बट इट इज ऑलवेज कमिंग एज सिकंदराबाद. दोस काइंड ऑफ इश्यूज कम्स. देन client side caching. Sorry interrupting, but in caches we do have TTL, right? So why are we saying कि पुराना response जाएगा? नहीं तो क्लाइंट बेस्ड कैश पे हम उस केस में हम बस रिस्पॉन्स करते हैं, क्या ये कैश रिस्पॉन्स है, तो हमने कैश कर रखा था बस कि ठीक है ये रिक्वेस्ट आ चुकी है कि गूगल की एक जगह सेम लाट लॉन्ग बार बार क्यों मंगाना है, बहुत सिंपली पुट. तो उस केस में हमारा टीटीएल वाज फॉरएवर. दैट वाज अ बग व्हिच वी एनकाउंटर्ड. सेम लाट लॉन्ग क्यों मंगाओगे. बट सो नॉर्मली लोग क्लाइंट साइड कैशिंग नहीं करते. तो whenever you see client side caching happening, you should rethink about it कि ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है. मेम कैश तो बहुत हेवीली यूज होता है. और बताएंगे और कौन कौन से कैश है हमारे. डिस्ट्रीब्यूटेड कैश हम यूज करते हैं रिस्पॉन्सेज के लिए, बट दैट इज टू ऑप्टिमाइज कि बहुत सारी प्रेजेंटेशन लेवल प्रोसेसिंग करनी है आपको, ठीक है. लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन लेवल प्रोसेसिंग करनी है, तो क्या आप उस यूजर आईडी डिवाइस आईडी का, और वो बहुत रेफरेंस हो रहा है, तो क्या कैन वी डू इट वन टाइम एंड लॉग इट फॉर डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना, until and unless that it changes fundamentally. Example, एक SPL जैसे आती है हमारे लिए, वो चेंज नहीं होती है, करेक्ट, until unless कोई एक इवेंट उसको ट्रिगर करता है चेंज, which is कि उसमें कोई वैल्यू ऐड हुई, you added something, you removed something, both of these, या फिर you deleted the SPL. तब तक इन ट्रिगर पॉइंट्स के अलावा वो उस डायमेंशन के अगेंस्ट which is that unique reference which is the key which you are getting the SPL for, वो सेम रहेगी. तो इन केसेस में हम रेडिस कैश में डंप मार देते हैं उसको, और इन एक्सटर्नल इवेंट्स पे उसको बस फ्लश कर देते हैं. एंड यस इट आल्सो हैज अ टीटीएल ऑफ लेट्स से 6. कितना है हिमांशु, 2 घंटे 2.5 घंटे, कितना ये कम है अपना. हिमांशु नहीं सुन रहा अभी. Muskan, और ऐड करेगा. Muskan, yes, did you ask Redis versus indexing or as a part of your question? Because I those think are, it's a part of question. because those are like two different things, like they solve for different things, right? Redis solves for if you know what you want to find and you want to find it quickly. Indexing solves for the finding, like speeding up the finding part, right? So let's say if there are 3 keys, user and age, and you want to say I want to run this query, sorry, gender and age, you want to run a query where gender is male and age is greater than 27, let's say. Now index is created so that you can quickly find all the documents which follow this pattern, right? You are still finding, it's solving for finding. However, Redis is only solving for, you literally have one finding parameter, which is like one key. And you're like, okay, give me the response for this. So one solves for finding and one solves for fast retrieval. And because these are two different things, a database itself uses both the thing. It uses index for fast, like speeding up the finding, but because after finding it has to go to the disk itself, it uses disk level caching
so that the retrieval part is also fast. Like once they know the address, they're like, okay, let me quickly find, retrieve the data faster than the disk. So our database basically uses both indexing and caching because the purposes are different. Database itself has caches cache. also Yeah. without us configuring anything. Yeah, adding Muskan, what your point was about latency. I remember Manish and me were checking whether we put a Redis cache over core category or not once, right? And we saw the response time of the API after Node 14 was 20 ms, right? Manish, itna hi tha na? And then we thought there is no need of putting a cache. You need to see what is the response. अगर बहुत drastically save कर सकते हो cache से, क्योंकि cache लगाना is again creates issues. It's not only it solves for latency, but it brings its own problem on scale. अगर तुमने कुछ कैश कर दिया तो तुम्हें these external events पे you need to update it also. Simple operational वो भी आता है, recaching से आएगा, cache miss rate भी आएगा, सब ध्यान में रखना होगा आपको. हाँ, तो वन ऑफ द क्वेश्चन है कि जो इंडेक्स, ऐसा भी नहीं होता कि हर चीज इंडेक्स कर देनी चाहिए, ये भी जरूरी नहीं. वहां पर भी रेफरेंस इज इम्पोर्टेंट कि व्हाट इज एक्चुअली क्वेरिंग द मोस्ट, बीइंग क्वेरीड द मोस्ट, वो इंडेक्स हेल्प करता है रादर देन पूरा हर चीज इंडेक्स कर दो. तुमने टेक्निकली, अगर आपने हर चीज इंडेक्स कर दी तो आपने टेक्निकली डेटाबेस ही इंडेक्स बना दिया वापस से, है ना, तो फिर फायदा ही नहीं हुआ, है ना. तो वो नहीं होना था, इसलिए हर चीज इंडेक्स नहीं करनी चाहिए. रेफरेंस का लॉजिक वहां पर भी है, रेफरेंस का लॉजिक मेम कैश क्रिएशन पे भी है. क्या बहुत ज्यादा रेफरेंस हो रहा है. It's a very famous line Manish wrote. हाँ, ठीक है. I guess that's it for today, guys. Good discussion with everyone. Next time we'll bring naming still hurts. Yes, Saman. Naming still hurts. Sarthak, you don't get the joke, right? No. You will. So as your career grows, you will learn these jokes. Chalo, I'll stop for Bakar.